Hey everyone, welcome back to my channel. Today I am taking you on an incredible journey through the stunning Parvati Valley. Yes, we are going Kasol. तो रास्ते में हम लोगों ने किया बहुत सारा फन और हम लोग गए दिल्ली से कसौल के लिए. So early morning we reached Kasol, the mini Israel of India, famous for its beautiful landscapes, laid-back vibe and vibrant cafes. So हमारा कैंप एरिया जो था वो बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे था, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ी. बट द जर्नी विद itself was really beautiful. Just have a look, guys. सो ये थोड़ा सा ट्रेक करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने कैंप साइड में. फाइनली गाइस, दिस वाज आवर स्टे फॉर द नाइट एंड जस्ट हैव अ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. ट्रस्ट मी, setting up the campsite is the best part of the fun. And if you are new to camping, there are plenty of places in Kasol that offers pre-arranged campsite, making it super easy and comfortable for you. तो कैंप में पहुंचने के बाद हम लोगों ने किया फ्रेशन अप और फिर हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रेडी हुए टू एक्सप्लोर कसौल. उसके लिए हम लोगों ने किया अपनी एक स्कूटी रेंट. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कसौल. So we just rented the scooty for the day and the prices was 700 for a day अगर आप स्कूटी रेंट करते हैं. अदरवाइज अगर आप बाइक से एक्सप्लोर करना चाहते हैं माउंटेनियस एरिया में तो इट टोटली वेरीज, लाइक इट कुड बी 1000 rupees for a day or 1500. And the rental process is quite simple. You just need your DL and the amount which you have to deposit and yes, you are ready to go. तो कसौल एक्सप्लोर करने के बाद we went to a small village named Tosh, and the ride from Kasol to Tosh is absolutely breathtaking. You have got to see these scenic winding roads, lush greenery everywhere, and every turn gives you a beautiful way. Riding a scooty gives you so much freedom. You can stop whenever you want to take in the scenery. And here we are at Tosh. This village is perched right at the top with an amazing view of the valley. Tosh is lot more rustic than Kasol, but that's what makes it special, right? You can see traditional wooden houses and life here is simple yet so beautiful. Let me show you around. ये स्मॉल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाय वॉक ही थोड़ा बहुत ट्रेकिंग करनी पड़ती है. एंड Tosh is filled with warm and friendly people.
So there are so many cafes around here, and most of the cafes which are run by the locals. So you can just chill, grab a cup of chai and enjoy the majestic mountain views. Also यहाँ पे हम लोग गए थे तो हम लोगों ने मोमोज ट्राई किया था यहाँ, and it was quite good as well as थुक्पा. So what my recommendation would be, अगर आप लोग कैफेज जा रहे हैं तो आप वहाँ का माउंटेनियस फूड ही ट्राई करें. Don't just try pasta and pizza and all. The vibe here is so peaceful and it feels like the time has slowed down. So if you are planning a trip to Kusol, definitely try to take some time to visit Tosh, even if it means just renting a scooty for the day. Also, let me know in the comment section if you have been to this place or you are visiting this place soon. So there were so many people who recommended a cafe named Pink Floyd. तो हम लोग on the way थे उसी cafe को explore करने के लिए. I'll show you the ambience of the place. It was good, quite good, but the food was not worth it or up to the mark. We didn't like the quality of the food. So if you just want to enjoy the ambience and enjoy the scenic view, then you can visit this place. Otherwise, for food, I won't recommend this place because this is very overhyped according to me. So तोश विलेज एक्सप्लोर करने के बाद रात होने से पहले हम लोग निकल गए कसौल के लिए एंड देन वी रीच्ड मणिकरण साहिब गुरुद्वारा. I could already feel the spiritual energy of this place. This is not only a sacred place for Sikh, but it also has a very cultural significance for Hindus. यहाँ पे आपको शिव टेम्पल भी मिलेगा. So the hot springs here are believed to have the healing properties and you can see people taking a dip and even using the water to cook the langar food. It's really fascinating how these hot springs continue to flow in such cold weather. तो गुरुद्वारा में हम लोगों ने दर्शन किया, फिर वहीं से लंगर खा के हम लोग गए थे शिव मंदिर. तो वहां पे हमने देखा कि अगर आप लोग एक पोटली के अंदर राइस को बॉईल उस पानी में डालते हैं हॉट स्प्रिंग में, तो वो 10 मिनट्स के अंदर आपको वो राइस बॉईल करके दे देता है एंड इट्स रियली मैजिकल. तो दर्शन के बाद हम लोग गए कसौल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए. हमने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग एंड देन वी ट्राइड द फेमस डिश लाफिंग एंड tiramisu. So after having dinner, we called it a day. I hope you enjoyed this little adventure through Kasol and Tosh. Let me know in the comments. And don't forget to like, share and subscribe if you enjoyed this vlog. There are a lot more adventures coming your way. Until then, take care and keep exploring. Bye!